How are you? I hope you all are doing well. Have you started reading new books and all? Have you started practicing the difficult words in English? How about English grammar? Are you doing that? Great. Now, we will look at something which is like a magic, okay? You know, being kind is like a magic. It brings about a lot of cheer on the other person's face. So, let's read this chapter. The chapter's name is Magic of Kindness. Let's look at the prologue. What does it say? Compassion is a sympathetic pity and concern for the sufferings of other people. We should show compassion towards everyone. We should do little deeds of love for those who need it. We must feel love for all, no matter whether they are of our own family or from another family, whether they are rich or poor. Compassion enhances our ability to feel the emotions of another person and understand that person better. So बच्चों, हम हमेशा कहते हैं कि दूसरों के साथ रूड मत बनो. Be compassionate towards others. Understand what they are going through, what their feelings are. देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक इंसान स्माइल कर रहा होता है बट हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है. ओके, सो if you really be rude to that person at that moment of time, he may just start crying or she may just start crying or she may just burst out. तो आपको नहीं पता कि कौन से सिचुएशन में कौन होता है. हमेशा be compassionate to others, be kind to others, bring a smile on other people's face. Don't bring a frown or don't bring tears to them. Okay, so आप जब you are talking about compassion, it is not necessary to have compassion towards rich people. You have to be compassionate to all, treat them equal, to poor people also. Okay, so now let's warm up. Are you happy with the way you treat a person whom you don't like? Why or why not? What acts of kindness could you undertake as a student? Discuss. Okay, children, it's not necessary that we have to like everyone. Okay, we all are human. We choose our people. But that does not mean that we express our dislike for someone. If we don't like the person, let's not get involved with that person. उनसे बात ही मत करो. उनसे थोड़ा दूरी ही बना के रखो या हाय हेलो तक रखो. But उनके साथ you have to be kind to them. Okay, not show your dislike. क्योंकि क्या होता है, you are hurting that person by telling them or expressing what you feel about them. Okay, that is more hurtful. उससे तो अच्छा है आप थोड़ी दूरी बना के रख लो. Right, children? So now, let's look at the teacher's tip. The teacher should narrate a small incident to convey the importance of being kind and generous. The teacher must encourage the students to share their thoughts about being kind. Okay, so children, be kind towards others, be generous. किसी को कुछ help चाहिए तो feel free to do so. Don't hesitate. Be good, okay, always to others, help them. Okay, now let's read this chapter to understand what compassion is. What is the magic of kindness? Okay, Ria had to go for 15 days to the summer camp. Many of her friends were also going. There were many interesting activities planned for all of them during their long stay. She was quite excited about the new experience. So रिया 15 दिन के लिए समर कैंप पे जाने वाली थी. उसके दोस्त भी आने वाले थे. बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लान की थी और she was very excited to go. But there was something she was also sad about. The third day in the camp would be her birthday. Ria was sad about missing the celebration with family. She was all the more sad that she would be missing the tasty cookies her mother prepared every year. These were birthday special cookies and Ria simply loved them. Okay, तो although Ria was very excited to go, काफ़ी excitement थी उसके मन में, but फिर भी वो थोड़ी sad थी क्योंकि कैंप के तीसरे दिन उसका बर्थडे था और उसको बुरा इसके लिए लगने वाला था क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन फैमिली के साथ मिस करने वाली थी. उसकी मम्मी उसके लिए हर बर्थडे पे स्पेशल कुकीज़ बनाने वाली थी which she was going to miss. Don't worry, Ria. We will celebrate once you are back from the camp. I will surely bake the cookies too, her mother assured. So,
जब उसने मम्मा को बताया कि आई एम रियली फीलिंग सैड, सो उसकी मम्मा ने कहा कि यू डोंट हैव टू बी सैड, जब तुम वापस आ जाओगी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुम्हारे लिए वो कुकीज़ बना के रखूँगी. But Ria wanted the cookies on her birthday, so her mother promised to send a box of cookies to the camp. तो रिया बोलने लगी, जिद करने लगी कि मुझे मेरे बर्थडे पे ही चाहिए. तो उसकी मम्मी ने उसको प्रॉमिस किया कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं बॉक्स भर के कुकीज़ कैंप में भेज दूंगी. The teacher in charge of the camp also promised a special celebration. Ria was happy and left for the camp. On the morning of her birthday, she was greeted by all of her teachers and friends. Some of them had painted beautiful cards for her, while some had picked up some nice flowers, strange pebbles, and other interesting things from their nature walk. Ria thanked everyone and eagerly waited for the box of cookies that her mother had promised. तो टीचर भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन हम लोग अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे. तो रिया कैंप के लिए चली जाती है. ओके, अब उसका बर्थडे आ जाता है. सारे फ्रेंड्स, सारे टीचर्स उसको अच्छे से विश करते हैं. कोई फ्रेंड्स उसको फ्लावर्स देते हैं, कोई अलग अलग किस्म के जो पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो गिफ्ट करते हैं उसको, और अलग अलग चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें उसको मिलती है. तो वो सबको थैंक यू बोलती है, बट उसका ध्यान कहाँ था, वो किस चीज़ के लिए वेट करती. She was waiting for the box of cookies. The box finally arrived in the afternoon and little Ria was delighted. She ate a few and then placed the box under her bed. The evening was full of fun. The teachers had arranged a huge cookie-shaped cake for her, as they all knew how much she loved cookies. Ria and her friends played several games and danced till it was finally time to go to bed. तो उसका जो कुकीज़ का बॉक्स होता है वो आफ्टरनून में आ जाता है. रिया उसमें से थोड़े से कुकीज़ खाती है और बाकी अपने बेड के नीचे रख देती है. और जो टीचर होती है एक बड़ा सा केक बनाती है विच इज ऑफ अ शेप ऑफ अ कुकी. ओके, एंड देन बिकॉज टीचर को पता है कि इसको कुकीज़ पसंद है, तो वो केक कटिंग हो जाता है. दे प्ले लॉट ऑफ गेम्स, दे डांस, एंड फाइनली इट्स टाइम टू गो टू बेड. सो व्हेन रिया रिटर्न टू हर बेड शी वाज टेम्प्टेड टू हैव सम मोर कुकीज़. After all, they were her favorites. However, when she opened the box, she was shocked. The box was empty. Someone had stolen all the cookies. Poor Ria felt so helpless. She ran to her teacher and told her everything. Her teacher assured her that she would surely find her cookies. तो जब रिया अपने रूम में वापस चली जाती है, उसको टेम्पटेशन हो जाता है कि चलो मैं और कुकीज़ खा लेती हूँ. जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती है तो कुकीज़ का बॉक्स खाली पड़ा है. ओके, किसी उसको समझ में आया कि किसी ने तो उसके कुकीज़ चोरी किए. वो भाग के अपने टीचर के पास जाती है और सब कुछ बता देती है. तो टीचर उसको अश्योर करती है कि डोंट वरी, वी विल फाइंड योर कुकीज़. ओके, नाउ चिल्ड्रन क्विकली डू द परफॉर्मेंस ट्रैकर क्वेश्चंस बिकॉज वी नीड टू नो हाउ मच यू फॉलोड द स्टोरी सो फार. ऑलराइट. नेक्स्ट मॉर्निंग द कैंप काउंसलर who had been told of the theft saw another girl sitting behind a tree eating the stolen cookies. That young girl, she said to herself, must be taught not to steal. She came to Ria and said to her, I know who stole your cookies. Will you help me teach her a lesson? No, just punish her, Ria shouted. No, that would make her repent and hate you. The counselor explained, I want you to call your mother and ask her to send you another box of cookies. तो फिर नेक्स्ट डे जो कैंप के काउंसलर होते हैं वो आ जाते हैं ढूंढने के लिए कि किसने कुकीज़ स्टील किए. तभी वो देखते हैं कि एक लड़की है जो पेड़ के पास बैठ के वो स्टोलन कुकीज़ खा रही है. तो फिर जो काउंसलर होती है वो पूछती है कि क्या मैं उसको कुछ हम विल टीच हर अ लेसन, ओके, बिकॉज शी स्टोलन समथिंग. तो रिया कहती है नहीं नहीं, आप सिर्फ उसको पनिश करो. तो कहती है, काउंसलर कहती है कि अगर उसको पनिश करेंगे तो शी विल रिपेंट ऑन व्हाट शी इज़ डन. Okay, and she'll start hating you. So we have to teach her a lesson. We have to make her understand that what act she's done is wrong. तो अगले दिन सुबह वो जो कैंप के काउंसलर होते हैं वो आ जाते हैं ढूंढने के लिए कि चोरी किसने की. ओके, और तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो पेड़ के पीछे बैठ के उसके वो जो कुकीज़ जो चोरी करती है वो खा रही होती है. तो वो बताते कि
वो जो लड़की है उसने तुम्हारे कुकीज़ स्टील किए, और रिया से पूछते हैं कि विल यू हेल्प मी टीच हर अ लेसन, क्या हम उसको उसने जो किया है वो गलत किया है वो बताने के लिए, उसको लेसन टीच करने के लिए मुझे हेल्प करोगी? तो रिया कहती है नहीं नहीं, आप उसको सिर्फ पनिश करो। तो जो काउंसलर होती है वो कहती है अगर मैं उसको पनिश करूंगी शी विल रिपेंट and she will feel guilty about what she has done and she will start hating you also, okay? वो तुम्हें हेट करने लगेगी। तो एक काम करते हैं, हम उसको समझाने का अलग तरीका यूज़ करते, okay? So I want you to call your mother and ask her to send you another box of cookies. तो आप अपनी मम्मी को फ़ोन करो और उसको कहो कि आपको और एक बॉक्स चाहिए कुकीज़ का। Riya was not sure of what the counselor wanted to do. However, she did as the counselor asked. 2 days later, she received another box of cookies from her mother. Now, said the counselor, the girl who stole your cookies is playing near the lake. Go there and share your cookies with her. But she is a thief, protested Riya. I know, but try it and see what happens. Half an hour later, the camp counselor saw the two girls coming up the hill. Arm in arm, they were smiling and talking as if they had been friends for ages. The girl who had stolen the cookies was earnestly requesting Riya to accept her bracelet for the stolen cookies. Riya, on the other hand, was sincerely refusing the gift from her new friend. I should have shared them with all of you anyway, was her reply. So, बच्चों क्या होता है, फिर 2 दिन के बाद उसकी मम्मी जो होती है वो कुकीज़ भेजती है। अब वो कुकीज़ आ जाते हैं तो जो काउंसलर होते हैं वो काउंसलर कहते हैं रिया को कि ये कुकीज़ का बॉक्स लेके जाओ और तुम उस लड़की को दे दो जो वहाँ पे लेक के पास खेल रही है, ओके, और उसके साथ शेयर करो। तो रिया कहती है नहीं, पर वो तो चोर है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो काउंसलर कहती है मुझे पता है वो चोर है, उसने चोरी की है, गलत काम किया है, बट गो एंड डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। आधे घंटे के बाद जब काउंसलर देखते कि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ वो हिल से नीचे आ रही है, एक दूसरे के साथ बातें कर रही है, दे आर लाइक वॉकिंग आर्म इन आर्म विथ ईच अदर एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एज इफ दे आर लाइक वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, ओके। और फिर वो जो लड़की होती है जिसने चोरी की है वो रिया के पीछे पड़ी रहती कि मैंने तुम्हारी कुकीज़ ले ली ना, उसके बदले तुम मेरा ब्रेसलेट ले लो, ओके। सो रिया जो होती है वो सिंसियर होती है, वो उसको रिफ्यूज़ करती है कि नहीं नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, और वो उसको फील होता है कि मैं वो उस लड़की को बोलती है कि आई शुड हैव शेयर्ड माई कुकीज़ विथ यू अर्लियर ओनली, okay, had I done that earlier, had I shared my cookies with you earlier, this wouldn't have happened, okay. So यही होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई चीज़ होती है, ओके, स्पेशली खाने की चीज़ें होती है, वी ऑलवेज टेंड टू शेयर विथ आवर फ्रेंड्स। See, it's a small gesture that we can do with our friends. After all, जब मम्मा कुछ भेजती है, it is not only for yourself, okay? आप हमेशा देखोगे आपकी मम्मी जो है आपको हमेशा एक्स्ट्रा देगी। क्यों? Because she wants you to learn the act of sharing. Sharing is another way of caring for people. तो जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आती हो, okay, you know that it is lots for you to finish and it is really lots for you. You can always share it with others. उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको पता लगता है कि आपकी चीज़ें कम हो रही है, बट आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि वो चीज़ें कम हो रही है बट आपके दोस्त बढ़ रहे हैं। You are having more friends, you are having people who care for you nearby and you are bringing a smile on their face as well. So children, learn to share things with others and be grateful and be kind to others. Now quickly reread the chapter, to the important words, to the difficult words, and don't forget to the back exercises.